this is Nabila. Welcome to my YouTube channel and on my show Nabila Talks. इस शो की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी कि बहुत से लोग इस इंडस्ट्री के हैं, इस फील्ड के हैं जिनसे मैं बड़ी इम्प्रेस हूँ and they are going to be the future and the women that we can relate to, the women that are balancing their lives with their profession, with their personal lives, children, homemakers. और ये हमारी आज की शीरोज़ हैं जिनको होपफुली जो यंग जनरेशन हमारी है वो फॉलो करे और देखें कि किस तरह से बैलेंस कर और आप जो चाहें अपना ड्रीम अचीव कर सकते हैं. तो आज हमारे साथ हैं the very famous all-in-one celebrity, started from hosting, VJing, acting and one of the best anchors, Sanam Jung. Wow, that's like a lot, Nabila saying that, that's too much for me. But I don't know Nabila. First of all, congratulations. Thank you. And you're a great host, by the way. Oh, there's nothing untouched by Nabila, okay? Now, hosting, now we're done and dusted, now that you're here. Okay, Sanam, should I call you Sanam Jung or Jung? यानी कि जंग वाला खतरनाक वाला है जंग या JUNG? It's JUNG, खतरनाक वाला नहीं है, लेकिन हमारा खून भी बड़ा खतरनाक है. हमारे अगर आप खानदान वालों से मिल रहे हैं, बट या इट्स JUNG. एंड बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं. सनम जैंग भी कहते हैं कभी कभार लोग, झंग भी कहते हैं. लाइक निदा ऑलवेज कॉल्स मी सनम झंग, आज हमारे शो पे आएंगे. सो आई लेट हर से इट बिकॉज इट्स ओके. बट हमारा जो ताल्लुक है वो हिंदुस्तान से, हैदराबाद दक्कन से. हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो चीफ जस्टिस थे वहाँ के, तो वहाँ से हमें टाइटल मिला सर बुलंद जंग. तो सिंस देन वी आर ऑल जंग. अच्छा, लेट मी ऑल्सो टेल यू वन थिंग. डू यू नो, आई जस्ट डिडंट स्टार्ट ऑफ एज अ वीजे और एन एंकर. मेरा जो सबसे पहले जो मुझे काम मिला, बताओ कहाँ से मिला? नबीला से. Really? Yes. Wow. You remember, of course, your son Zakir. We had a modeling agency called Zinc. Yes, called yes, Zinc, and one day, I found out कि यार there's free makeover at Nabila, and in return they just want our pictures. So मैंने कहा, oh my God, this is big. We were all university going kids this time पे. और प्रॉब्ली A levels था, क्या था मुझे याद नहीं. और इतने पैसे तो होते नहीं थे कि जाके खुद से मेकअप भी करवा लें ये वो. तो मैंने कहा चलो चलते हैं, फ्री मेकओवर हो जाएगा, एंड देन आई विल गो विथ माय फ्रेंड्स फॉर अ नाइस डिनर. So I went, we got some shots taken. I was very happy. मैंने कहा thank you everybody, bye. And I was like, yeah, I got my makeup done from Nabila. कुछ दिन बाद ना मुझे कॉल आने लग गई कि ये कमर्शियल है and do you want to do it? I said no, I don't want to do it. I just wanted to get my makeup done and I got that done. Thank you. But that's how it all started, Wow. Yeah. No, so we did form Zinc, so because we are always looking for new faces, anyone who has the acting ability or the bone structure or the personality to be on TV, because I think this is our passion to introduce new people, new talent. And Zinc started off as a platform to be able to do that. Yeah. It wasn't like a money-making gimmick, but it was more like mediating between the talent and the industry. I'm so here thank because of you Zinc, for yeah. remembering that. That's good to hear. So Sanam, tell me about your journey. How you started, वो तो आपने बता दिया, and then how you progressed to being this amazing host. I think it just happened and a lot of it has to do with luck. So इस तरह कमर्शियल्स करते करते मैं अपना BBA कर लिया. मैंने साथ में फिर BBA करते करते मुझे होस्टिंग की ऑफर आ गई. मैंने कहा नहीं VJ, no, I haven't seen these shows, I don't think I can be a VJ, but I just gave an audition. और वो हो गया. हमने कहा सही है यार, किसको पॉकेट मनी तो बुरी नहीं है कि अगर आपको हफ्ते में 2 दिन जाना है, यू गेटिंग 30,000 रुपीज़, अ यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट. मैंने कहा दैट्स अमेजिंग. अब्बू अम्मी को मनाया. अम्मी तो मान गई थी, लेकिन अब्बू वाज लाइक नहीं, पढ़ाई इज़ इम्पॉर्टेंट, लेट हर गेट डन विद हर BBA. एंड ही इज़ लाइक, बट फाइनली मान गए. बट उन्होंने कहा था कि पढ़ाई ख़राब हुई तो दिस विल ऑल बंद. हाँ, तो करते करते मेरा पूरा MBA तक आई वॉज होस्टिंग. 8 चैनल से फिर आई स्टार्टेड डूइंग बेटर, फिर मैं दूसरे चैनल पे चली गई. नाउ MBA डन ना, एंड मेरा चैनल भी बंद हो गया. दैट वाज ARG TV. And I'm like, now what do I do?
ओके आई सेड ओके इट्स टाइम टू गेट अ रियल जॉब नाउ, ठीक है। तो मैंने अपनी CV बनाई एंड मेरा बड़ा दिल था ना मैं कॉर्पोरेट में काम करूँ, बैंक में। एंड राइट व्हेन आई वाज अबाउट टू सेंड माय CV, नीना काशिफ स्टार्टेड कॉलिंग टू एक्ट। मैंने कहा देखो मुझे एक्टिंग तो आती नहीं और मुझे कोई शौक भी नहीं है, मैं नहीं कर सकती। कोई बात नहीं आके ऑडिशन दे दो। मैंने कहा अच्छा चलो ऑडिशन देने में क्या हर्ज है। आई वेंट, मैंने ऑडिशन दिया दिल मुस्तर के लिए। दिस वाज माय फर्स्ट ड्रामा। तो वहाँ जो मैंने ऑडिशन दिया, रूमी इंशा थे डायरेक्टर, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया ना कि ठीक है ये मुझे समझ नहीं आ रही। तो मैंने कहा था भाई मुझसे नहीं होगा, बट रूमी के बजाय डायरेक्टर चेंज हो गए शहजाद कश्मीरी से। सो दे कॉल्ड मी एंड ही लुक्ड एट मी, स्पोक टू मी, ही इज लाइक या आई वांट हर, she can do it, she will do it. And I said really? Okay. But it was really tough for me, Nabila. पहला सीरियल कोई एक्टिंग आती नहीं, पहली दफ़ा इमरान अब्बास मेरे सामने बैठा है, सरवत गिलानी नाम है, my God, these people are big names. But वो लोग इतने, they were down to earth and I had a blast doing it. And since then I've been doing it and I'm here. You never looked back. I never looked back. The industry didn't give me a chance to look back. But I think that's how the industry is. And then थोड़ा करके, I mean morning show is completely different. Acting करके बीच में शाइस्ता had gone for vacation or something. उनकी yearly leaves होती है, तो me and Essen were hosting her show on Jio. So I don't know where somebody saw me and they thought I could be a host. Then Fahad Mustafa जब नहीं था तो मैंने उसको replace किया जब वो नहीं था Hum TV पे, and then he left Hum TV, and that's how I started. They offered me and I said okay, I love to host, why not? And I think nothing succeeds like success. So, you know, once you do something and you get a good review, then you just do it better with more confidence, and that's how the it feels good. Everybody likes being appreciated. Appreciated for whatever it is, whether it's acting or it's being a good mother, whatever it is. Exactly. So talking about mother, you know, I want to know, ये तो आपकी professional journey हो गई, कि personal journey को आपने कैसे pursue किया और balance कैसे किया? Because being a mom is, I think, like the most difficult job. And then apart from that, being a public figure, like both these things very demanding. How did you manage? Honestly, for me it's very difficult, but I've seen Nadia Hussain doing it like this, like it's nobody's business. You know, there at every party with her, like there looking proper. Yeah, she's like 100%, and the kids are 100%, and everything is going so perfect in her life that I'm jealous. And I want to ask her, how Nadia? Please tell me. She's just so perfect. But I think that's how we should be. अब क्या है ना, मैं बहुत ज़्यादा वो ले लेती हूँ. Oh my God, Allah. Oh my God, her food. Oh my God, her school. But I think it's I need to calm myself down. I know it is very difficult to maintain your social media and maintain your work, and then Alaya ka sleeping time, subah uthne ka time. But I think I've learned it. Initially it was tough, it was difficult. I didn't work for a few years. I think I wasn't acting at all. With the show I would manage her, but now she's become older. She's 4 years old now. I have my mother, my mother-in-law, my sisters, so they help me out. But the most, the guilt is there. You're the right. working woman's guilt. It is there. You know, there are times when I look at other mothers, they're giving 100% time, subah se leke raat tak. And I do feel guilty then कि यार काश कि मैं भी पूरा दिन मैं इसको पार्क लेके जा सकती थी, या काश मैं इसको खुद अपने हाथों से खाना खिलाती. But then it's okay. I mean, this is what, I mean, we need to balance it too. So I do those things on Sundays and I feel better then. Yeah, so I was always a working woman, and like and like every working woman, we have this guilt क्योंकि हमें इतना प्रेशर किया जाता है कि अच्छा बच्चे की अगर तबीयत खराब हुई है, that's because you're not available. अगर उसके नाखून नहीं कटे हैं तो it's because you're not available. Mother, never a father's fault. नहीं. Always a mother's fault. कितनी दुबली है, खिला नहीं रही. मैं माँ के पास टाइम ही नहीं है. तो लेकिन I feel कि I had to heal from this mother's guilt, and it took me a long time, a lot of like therapy and sessions to understand कि जो quality of time is better than quantity of time. That is right. So these जो full time mothers हैं, अगर आप वो ड्रामे देख रही हैं और आप friends के साथ coffee parties में जा रही हैं या आप social media पे हैं, तो आपके घर होने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है. So it's not
how much time you're at home, but it's when you're with your child, what quality of time it is. And the quality of time wali baat is so important that I mean all the mothers out there will relate to this. The working mothers, they will know. I know you all do feel guilty, but जो आपने बात की ना कि जो हम ज़रा सा भी टाइम गुजारे अपना मोबाइल अगर साइट पे करके वो 2 घंटे भी उसको मिल जाए हमारे बच्चे को, just bonding with Committed. us. Committed. And you know, Alaya is 4 years old. She knows when I'm using my phone. She says it, Mama, leave the phone. I will hide it. You're not spending time with me today. And I feel so guilty. And I'm like, phone छुपाओ भाई. सही कह रही हो. हाँ, because बच्चे जो हैं वो बहुत observe करते हैं. They learn from not what you say but what you are. Yes. So you know you cannot lie to them and you cannot hoodwink kids because they're very smart. That's right. This generation is way too smart. So ये फैमिली का हो गया, होम का हो गया. अब जो एक सोशल मीडिया का या जो आपका पब्लिक एक पर्सोना है जिसको आप बैलेंस कर रही हैं, माशाल्लाह से आपके कोई हमने अभी तक स्कैंडल्स भी नहीं सुने. So it's a very good balance that you're doing. उसको how do you feel about it? How do you feel about the pressure कि जी वज़न ज़्यादा हो गया, इसमें अच्छी लग रही है, नहीं आज अच्छी नहीं लग रही, तो ये क्यों पहना था, तो ये क्यों, इतने जो कमेंट्स आते हैं और इतना जो इंट्रूडिंग होता है, जो फीडबैक कभी-कभी आता है. How do you filter that? I'm not going to lie, Nabila. I mean, I'm not going to say कि you know it doesn't affect me. I don't care. Oh look, I don't read out comments. No, it does affect me. You know, I'm a normal person. I'm a human being, and I'm just a girl just like you, a woman just like you, and कोई भी कहता है तो feel होता है. But I remember when I had gained weight, I was pregnant. That's when people were, of course. I remember you did a show and you told me कि you know मुझे इतने comments आ रहे हैं, I don't know how to and they dress, were telling me to be. sit at home and not do the show because I'm pregnant. So I was like, क्यों बाकी लोग, मेरा काम का nature ये है कि मैं television पे काम करती हूँ. कुछ लोग ऑफिस में काम करते हैं, तो क्या सारी लड़कियां जो प्रेग्नेंट हैं वो घर पे बैठ जाएं, वो काम ना करें, क्यों? तो मेरा एक तो वो था. फिर उसके बाद पोस्ट प्रेगनेंसी जो वेट लॉस करना बड़ा मुश्किल है फॉर मी बिकॉज आई लव टू ईट, और मैं डिप्रेशन में और मैं स्ट्रेस में और खाती हूँ. तो मेरे लिए वो रिवर्स हो रहा था. एवरीबडी टेलिंग मी, ओ यू नो यू लुक लाइक अ काउ, एलिफेंट and all those things. But then my husband was so supportive, Nabila. उसने मुझे Kassam would never tell me I'm fat. He would say, oh, you're beautiful, you're just perfect. And honestly, I was believing what he said. Like I would look in the mirror and I'd be like, इतनी मोटी तो नहीं हूँ. But I was huge. I gained 20 kilos and I'm like, इतनी मोटी तो नहीं हूँ, पता नहीं लोग क्यों कह रहे हैं. He's telling me I'm beautiful. But then finally when it just really got too much, and then Kassam ने मुझे treadmill gift किया and he's like, run and show it to them that you can, okay? But you do it for yourself. And that's when I started and I lost 17.5 kilos. Wow. And even then they're telling me I'm fat. So now I don't care about you, okay? बिल्कुल बिल्कुल. I mean, first of all, it's lovely to have a very supportive husband. Yeah. And secondly, you know, I think it's all about you. It's how you feel and it's what makes you tick. And while it's very difficult कि हम उनके affect ना होने दें negative comments को, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम एक आपको होल अपने अराउंड रखें जिधर right. से आप सब ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करें, वरना तो इंसान किसी भी हाल में खुश नहीं है और आपको भी नहीं रहने देगा. Exactly. I mean, over a period of years, over time, I've learned this now. कि ठीक है, शुरू में तो बहुत इफेक्ट होता था. अब I laugh it off. ठीक है. I'm like, my family's like, listen, how can you? मैंने कहा, listen, you know, I've been through it. I've been in the industry for years. This has been happening. Now it's okay. Let them. They want to be noticed. That's why they write these things. But then there are very nice people also who love you and who will tell you that you're perfect no matter what. It's that's okay. Right, that's right. इंसान चेंज होता है, ऐसा नहीं हो सकता. With age, with time, मतलब कि मैं वैसी नहीं रह सकती हमेशा. And I why need to be should okay you? with You know, you're a woman, you're evolving, you will put on weight, you will be pregnant, I'll you lose will weight, age. I'll gain weight, of course. yeah. You'll change your hair, you'll change and your I want to makeup. enjoy my journey. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, and not apologize for it, but like you said कि बहुत से लोग हैं जो support करते हैं, they love you, and I think उनसे जो encouragement की energy मिलती है, that's also quite amazing. That's like fuel. Yeah, that So is it can be really definitely good. Yeah. Tell me something. How has Corona changed your mindset or your goals or your plans? Well, I mean, everything has changed. Like,
I mean, look at Alaya, look at the kids, they're all indoors. You know, we can't really plan much. I'm scared all the time for my parents. And work as well, I'm not working that much. Initially though, I didn't work at all for, you know, for a good period of time कि हो जाए सही हो जाए. Then I realized that this is not going anywhere, not anytime soon. It's going to take a lot of time, and I can't travel. I don't travel. You know, there's so many times I really want to go meet Kasam. He's not coming here because because of the threat, and it's really not safe. But yeah, things have really changed. And Where does he live? He's in the US. Oh, That's a great question. Ask me about him, please. People think that we're not together. But he's working there, and he's got a green card, so he has to complete his passport ka time period. And I have the visa, but Alaya does not. She doesn't have any visa, and she won't be getting any visa. So we've tried for 4 years. We've been trying to get her a visa, but you know how complicated it is. So we've applied for immigration now, and just waiting for the green card. so that's why he has to finish his time there. He has to finish his और ये time there. देखकर लोगों ने कोई स्टोरी बना दी कि कसाम तो आपकी पिक्चर्स में नहीं होता, और किसी ने खुद से ही लिख दिया दे सेपरेटेड. फिर किसी ने नीचे से लिखा हाँ मुझे पता है 3 दिन हो गए. फिर किसी ने लिखा कि कसाम ने आपको डिवोर्स क्यों दे दी. तो मैंने ऐसी तफरी में लिख दिया आपकी वजह से, और मैंने ये वाला इमोजी बनाया. एंड देन एवरीबडी वेंट क्रेजी, एंड आई एम लाइक, ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड, व्हाई इज इट ऑल ओवर द इंटरनेट. And I was laughing it off, and I was like, I know, he knows, our family knows. Why should I give, why should I tell them what's happening in our lives? But then there was so much pressure, family pressure, and then Kasam's bosses and all the friends and family, बड़ा अफसोस हुआ. क्या कर दिया कसाम ने? वो बेचारा, उसके ऊपर ही सारा ब्लेम आया था ना. Somebody wrote कि कसाम ने दूसरी शादी कर ली सनम को छोड़ के, क्योंकि सनम टाइम नहीं दे रही थी. And I was okay, कब की? तो देन मैंने फिर सबको बताया कि dude, there's nothing like that, and we're good, we're happy, This is terrible, हाँ, कि and it's very disturbing. because इस fake news इसी को तो कहते हैं कि वो बात का बतंगड़ बना के it's all over the place, and this is something so personal. And लोग realize नहीं करते ये इतनी personal चीज़ है. एक शादी एक इतना इतना sacred रिश्ता होता है, इतना खूबसूरत रिश्ता होता है, उसका आप सेकंड में किसी ऐसी कहते हैं किसी की डिवोर्स होगी, हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि for somebody who loves someone so much and has a beautiful daughter, and we've got a completely different kind of connection that I think nobody would ever understand. I mean, we're super... It's beyond being together in pictures. Yeah. I mean, even though we're not with each other every day, but we're always connected. And he's there I mean, when I'm down, depressed, he's the first one I call. He's more like a friend to me. हस्बैंड वाला कोई चक्कर नहीं है, कोई ये नहीं है कि वो आए तो मैं चाय लाऊं. वो मेरे लिए कभी ग्रीन टी बना देता है. ही टेल्स मी डोंट कुक यार, व्हाई डू यू वांट टू कुक, किचन गंदा होगा, फॉरगेट इट, लेट्स गो टू माय मदर्स हाउस. सो दैट्स आवर रिलेशनशिप. लाइक हम लोग बहुत एक दूसरे को आराम देते हैं, हम स्पेस देते हैं. आई थिंक मेरे ख्याल से दूरी की वजह से और ज़्यादा प्यार बढ़ता है. एंड इफ यू आर वर्किंग टुवर्ड्स अ गोल के ग्रीन कार्ड है या व्हाटएवर इमिग्रेशन, and why would I not want to be with my husband? I mean, of course Alaya misses him like anything. I miss him. Like हर छोटी छोटी जगह पे मुझे याद आता है उसके लिए कितना मुश्किल है that he is all alone over there. America, how depressing it is. No family, nobody. Winters, exactly. You're just alone. You're cooking for yourself. आप अपना काम करो, वापस आओ, बीवी बच्चे नहीं हैं. But he's coming this month, inshallah. So that's good to hear. Yeah. So that's one of the things that you couldn't travel in Corona. Yeah. उसके अलावा क्या? Also, Nabila, not just because of Corona. अब Kasam also says कि Alaya के पास या mother होना चाहिए या father. अब Alaya travel नहीं कर सकती, मेरे पास वीज़ा है. The only reason मैं कसाम से मिलने इसलिए नहीं जाती कि वो Alaya left out feel करेगी. बिल्कुल. और mama daddy are together and the child is all alone. That's why we wait for Kasam to come. या तो हम प्लान करते हैं कहीं बीच में टर्की चले जाएं, कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहाँ कसाम आ सके, मिल सके. Yeah. Collectively. This is the first time I've told everybody all this. No, it's sad that you need to justify. लेकिन it's really intrusive and it's like unbelievable कि लोग इस तरह के scandals एक छोटी सी बात से बना सकते हैं और social media पे साथ नहीं है. But I'm so happy that you have a great relationship and he's supportive and you guys are working towards something. Yeah. And mashallah. And the perfect family अगर साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, they have a nice dog. And if the connection is not there, तो वो तस्वीर
देख के तो लोग बहुत खुश हो जाएंगे, but that's not life. You know, What use is that picture? That's right. मैं यही सोच रही थी कि मैं कभी कभार होती थी ना, like I would tell Kasam कि we were so good together. Why did you have to go? क्या ज़रूरत थी करने की? हम सब हमारा जो भी है, कम है ज़्यादा है, हम लोग यहाँ खुश थे पाकिस्तान में, close to our parents and everybody. Then of course also his career is important. Like he's got more opportunities there and he's doing so well, alhamdulillah over there. तो फिर मैं देखती थी दूसरे लोगों के, I'm not the only one ना. Like sometimes I would complain to Allah Miya कि I miss him, and मेरी बेटी सबसे ज़्यादा Alaya, she deserves her father to be around her. And there's so many times when her teacher has told me कि आज हम लोग बाहर playground में खेल रहे थे, तो Alaya ने ऊपर plane देखा और बोला कि that's my daddy, that's my daddy. And she kept on saying, daddy's coming to Pakistan, daddy's coming. So she told me, when is the dad coming? She misses him. तो बट देन फिर मैंने ये सोचा कि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके फैमिलीज़ एक मुल्क में होती हैं और हस्बैंड कहीं और काम कर रहा था, तो मुझे उन लोगों से स्ट्रेंथ मिली, उन लड़कियों से मुझे स्ट्रेंथ मिली कि ये भी तो हैं. एंड आई थिंक एक आम खातून ने मुझे स्ट्रेंथ दी कि सनम इट्स नॉट अ बिग डील, तुम कोई अलग से नहीं हो जो तुम हमारा मियाँ दूर हो और तुम यहाँ स्ट्रगल करी हो वहाँ, इट्स ओके. पूरी दुनिया में लोग इस तरह होते हैं. So I'd like to thank all the people out there. Amazing. Wish you all the best with your plans. Yeah. Hope they materialize soon. और how are you managing the homeschooling जो ये कोरोना के बाद हुआ है, और it is so social tough. distancing and like you said cabin fever, you can't travel, priorities कुछ change हुई, कुछ हाँ ये तो है ना, rethinking का time मिला, बिल्कुल मिला. Actually also the problem with us is that we're so used to just working all the time and being on the go all the time that we have no time to think. Now we have so much time to think that sometimes I get depressed also. What's happening? But my connection with God has become stronger. Like like I see things around and I'm like everything's happening for a reason. Apart from that, yeah, you're talking about the online schooling for working mothers, it does become tough. क्योंकि ऐसा तो नहीं है, काम तो फिर भी होता है हमारा, and उनकी class start होती है 10:10 पे, and that's when we leave for our shoots, our drama shoots. We leave at 9:50, 10 o'clock. So managing that is a little tough, but then mothers are a blessing. अम्मी help करती हैं, सारी चीज़ें मैं निकाल के रखती हूँ, अम्मी फिर take over करती हैं. Okay, so your image has been so perfect and no scandal, nothing negative about it, और आप अब ये ड्रामा कर रही हैं जिसमें आप फर्स्ट नेगेटिव रोल अपना कर रही हैं, so how does that feel? Well, it was so much fun doing it. इतना मज़ा आया. The devil in you came out. Yes, it did. All of it, the आँखें घुमाना and the eyebrows and like being mean to somebody was so much fun because इतने सालों से जो ड्रामा के इसमें रो रहे हैं, everybody is being mean to you, and I think नेगेटिव का अपना चार्म है, मज़ा है. आपका इतनी वेरिएशन होती है, आपको किसी भी तरह चल सकते हो, आपको कुछ भी कर सकते हो. You can try things. So I think it's fun, but people were not expecting this from me and they were really upset कि मैंने कैसे कर लिया. आपकी शक्ल मासूम है, आप पे ये चीज़ सूट नहीं करती, आप मासूम कैरेक्टर्स किया करें. तो मैंने कही तो और भी अच्छा ना, मासूम लड़कियां जब अंदर से चालाक निकलती हैं तो लोग शॉक्ड हो जाते हैं. तो yeah, I mean, but it was fun doing it. Yeah, people are a little upset, लेकिन कुछ लोग मुझे रोक के कह भी ना, आपने बहुत अच्छा काम किया है. तो मैंने really thank you. If acting is your forte, you should be able to do everything. Yeah, you should be. That's right. That's what people don't understand ना. हम लोग समझते हैं मासूम लड़की, पॉजिटिव कैरेक्टर, सीधे बाल, चुटिया, बस. और गोरी? हाँ, गोरी भी. चलो अब तो वो चीज़ बेहतर हो गई मेरे ख्याल से, लेकिन और अगर वो नेगेटिव है तो वेस्टर्न कपड़े पहनो. ज़रूरी तो नहीं है ना, ज़रूरी नहीं है. मतलब कि एक मासूम शक्ल भी तेज़ हो सकती है, अंदर से उसका दिमाग ईविल सा हो सकता है. तो मेरे ख्याल से अब परसेप्शन चेंज हो रही है, जो स्टीरियोटाइप उन्होंने किए हुए हैं, that's changing. हो रही है, लेकिन बहुत मज़ा आता है नेगेटिव कैरेक्टर करने में. I wish I had done it earlier. Yeah, I just wanted to play very safe, Any roles that you would like to do, like something crazy or something like really offbeat?
I would love to do if I get a script like that. All my life I've gotten very सीधा scripts. But yeah, I would. अगर कोई different चीज़ आए, why not? I'm ready to experiment. It is my fault that I did not want to experiment earlier. I wanted to be safe. I wanted everybody to love me. That's why I did very masoom characters. But now it's bring it on, man. I don't care even if you don't love me. So you stop people pleasing. Yeah. Good. Yes, thanks to all that trolling and they calling me a cow and everything. Wow. I've become too gutsy now. It's Yeah. okay, bring it on. They say if it doesn't kill you, it makes you stronger. It So does, that it did. does. Yeah. Great. Anything you would like to say to our audience from this platform? Any question, any answer, any thought-provoking idea? Well, I would just like to say that, you know, life is short and just, I mean, लोगों में faults ना ढूंढें, लोगों की अच्छाइयाँ देखें, लोगों की खूबियाँ देखें और आप अपने अंदर से भी एक हर किसी के अंदर कोई एक चीज़ होती है जिससे वो स्पार्कल कर सकता है, शाइन कर सकता है और आप में भी है वो चीज़, सिर्फ ढूंढने की ज़रूरत है, तो ढूंढें उसे और शाइन करें और दूसरों को भी करने दें. So thank you very much for watching us and let us know what you thought of the questions and the content.